Today we are celebrating World Food Day. It is being celebrated in 150 countries and it is the most important event under the UN which is being held in all over the globe. And the objective of this event is to create the awareness among the people on the living things on the globe, on the earth, to handle the food very carefully. And most of the people, they ask, how is the water food while it has no calorific value? Basically, water is life, it's not the food. And no food can be prepared without water. Even 20% of the world food, which comes from the marine life, like fish and other animals, they require the water. And our all foods, they cannot be cultivated on the earth unless we have the water. Indirectly, water is food, and it's not the direct that will be having some nutrition value and we will adding considering water as a food. But the fact remains that our body can survive for many weeks without food, but cannot survive even for a week without water. That is the reality that we need to understand, that how important is the food day on which we are talking about the water. Or what today my objective will be to make you guys understand that what is water, how is it available and how we use it. Basically, we should need to understand the role of water and consumption of water and the sources of water which are available around the globe and how we have to treat them, how we are depleting them, how we have to use them. तो आज जो हमारा डे है उसमें particularly awareness about the water, its conservation, its proper utilization, that is our objective. And we have to look into that because this commodity is being used by each and everybody. Each and every human being. If every human being is using it, then the onus of this conservation and depletion of resources, conservation of water lies on everybody. That's the point which we have to look into. Today I have developed a little presentation for you guys to understand water, what is water, how the sources are available and how we can use it effectively and what are the various means to just reduce the pollution in the water which is causing health problems. And let's start with our presentation, please. This is very important slide. Around 2.5 billion people around the globe, which means 1 out of 10, they are facing water crisis or they are not having water for their daily requirements. 10% of the global population is in the country which has a high critical water stress. Either they are not having water or if they have water, आप देखते होंगे बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी कि फीमेल्स बहुत दूर से हमारे विलेजेस में भी पानी भर के अपने वो टैंक्स में छोटे से जो मटके से होते हैं उनमें भर के वो हाउस होल्ड वाटर के लिए लाते हैं। कराची में हम देखें देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर क्राइसिस। ये ऑल द टाइम जो कराची में हमें जितनी भी न्यूज़ मिल रही है पाकिस्तान में, द मोस्ट कंसर्न जो इनका प्रॉब्लम है मेनली दैट इज द वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये पानी है जो बाय 2050 35% जो है इसकी डिमांड इंक्रीज करे। 35% हमें बाय 2050 डिमांड इंक्रीज करेगी और जबकि हमारे रिसोर्सेज दे आर गेटिंग डिप्लीटेड। और सर एक नेक्स्ट जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्रीज जो है। जैसे ही हम अपने कहते इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री, जैसे ही आपकी इंडस्ट्री आएगी
तो इंडस्ट्री वाटर कंज्यूम करेगी, बॉयलर्स हैं, कूलिंग टावर्स हैं, वॉशिंग है। अगर आप टेक्सटाइल देखें उसमें आप वॉशिंग, ब्लीचिंग, डाइंग और पानी कितना वेस्ट कर रहे होंगे। एंड नाउ मैं जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जो हम वाटर वेस्ट करते हैं अराउंड 80% जो हम इंडस्ट्री से थ्रो कर रहे हैं उसका 80% के करीब तो हम ट्रीट ही नहीं कर रहे, जिसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ये है कि जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने सर्टेन पैरामीटर्स डेवलप किए हुए हैं कि आपने टू दिस एक्सटेंट वेस्ट को ट्रीट करके देन यू हैव टू डिस्चार्ज इनटू द रिसीविंग बॉडीज। अब रिसीविंग बॉडीज में जब आपका हाईली पोल्यूटेड वाटर विद BOD, COD, BH, TSS वो जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट द मेरीन लाइफ। Means that it will not provide the desirable conditions where our marine life can grow and flourish and we can have a food, marine food like fish. So this is another challenge. Environment में सिर्फ clean water नहीं है, इसमें waste water भी आएगा। आपने basically अपने water resources और bodies को protect करना है। Unfortunately, I have around 30 years experience in this field, rather 33 years. I had been struggling on various platforms. Not a single course in any university or institution is based on the water technology, on the conservation of water. And that's really a matter of great concern, where we have a population of around 240 million people, and we don't have any research institute. We don't need to do the research. Research is the job of the global researchers. Let them do their work. We have to implement those research technologies and adopt these technologies. आज भी जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, अगर आप देखें कि साफ पानी प्रोजेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था, आबे पाक था या और पानी है। We are looking toward the foreign companies. हम चाह रहे हैं कि billions of dollars वो बाहर चले जाएं, but it's very easy to opt this technology. We have this pride. Agaz and Sadiq with me is also chemical engineer. We started this organization around in 2001, almost 22 years. We started implementing international water treatment technologies in Pakistan. We successfully introduced. Now this sector is growing, but we cannot find even a single person from academia directly after graduation that who can contribute in our organization. We have to hire those people as a fresh engineers or fresh graduates, and it takes around 2 to 3 years to train them in this field and contribute. This is a very good opportunity for the academia. If someone comes, I have tried my level best to raise this level up to the politicians, bureaucrats, ministers to come in this field, but no one is interested. No one is interested to contribute. We can have thousands of the jobs in this area in the years to come. We have to look into that. That's an idea about the water. And there's a global warming is another issue. When you see the temperature of the world, Earth is expected to rise by 2 degrees centigrade. That's what we are studying for. That it should be minimum, it should come to 1.5 degrees. See, when the temperature on the Earth will increase, what will happen? All the glaciers will melt. We will have not any storage, and ultimately the resources of water will deplete. What are the major causes of this water depletion? These are increase in population, climate change, depletion of water resources, improper agriculture technique. This is another challenge. You know, कि अभी भी हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हम ओपन चैनल से वाटर दे रहे हैं, and we know a world, I say 2 decades before they started the drip irrigation, and they have developed
the seeds which require the less water. And still we are struggling to get the crops yield as per international standards. Our cotton yield, our wheat yield per acre is very less. Maybe the 50% of the India, even India. We are still struggling. We are not strengthening our agriculture technique, strengthening our farmers. We are just having everything on the TVs and the talk shows and everything. Minister comes, he will explain something we are doing. There are no physical activity going on. We should be concerned about the results which we are getting, not about the bubble or the reductive, and we can give a wonderful idea. There is no use of those ideas which cannot be implemented or cannot bring the change or the result on the ground. What I expect from the students and from the university, when you leave the university, you should be in a position to contribute. Again, you should not start the learning in the industry or at the job place. That is the only difference in the international and Pakistan education system. They have the capability. Even I take this opportunity. मैं UMT में आया हूँ, उनका बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आपके स्टूडेंट भी बहुत ब्रिलियंट हैं. But being the senior and having the experience in the business in the industry, I request कि हम लोगों के जो मैं UMT की बात नहीं कर रहा, एक जनरल सोसाइटी की बात कर, who don't have even communication skills. Communication is basically how you express anything. अगर कोई प्रॉब्लम आई है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको कोई आइडिया आया है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. आपके माशाल्लाह आजकल के बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत है, बट इस कॉन्फिडेंस को अपने राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है. उसको डायरेक्शन देने के लिए हमारी फैकल्टी, हमारी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी दुनिया की चीज़ हो, चाहे वो एप्पल फ़ोन हो जो बहुत एस्टेब्लिश ब्रांड है, उसको मार्केटिंग ज़रूर करनी पड़ती है और वो कस्टमर फीडबैक ज़रूर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूवमेंट आएंगी. Why university don't do it? Why don't they get the feedback from the end user? दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट ऐसे मार्केट नहीं होती जिसकी सेल्स प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए टेक्निक्स न डेवलप की है. इवन पानी की बॉटल मैंने सेल करनी है तो अगर मेरे नाम से कोई आएगी तो शायद आप शेल्फ से भी नहीं उठाएंगे, अनलेस कि वो नेस्ले ने इतना स्ट्राइक किया हुआ है आपको, एक्वाफिना ने किया हुआ है आपको, पेप्सी ने और ब्रांड्स ने किया हुआ है कि दैट इज द ब्रांडिंग. तो हमें जो भी है, अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इस सोसाइटी में, इस नेशन में, और ताकि हम लोग कर्ज करते रहते हैं. एक तो जिस तरह हम कंप्यूटर में सर देखते हैं ना, सेफ मोड स्टार्ट करने सेफ मोड में रहते हैं और इस तरह हम कंप्लेन मोड में रहते हैं. हमने अपना एटीट्यूड ऐसे डेवलप कर लिया कि हर वक्त कंप्लेन करनी है. कम अप विद आइडियाज. ओके, इफ यू आर सीइंग सम प्रॉब्लम, अगर इस वक्त दिन है तो सबको पता कि दिन है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं. कम अप विद आइडियाज. आपका माइंड तब आगे बढ़ेगा, तब काम करेगा जब आप उसको उसके लिए आइडियाज देंगे. ओके, डोंट डिस्करेज एनीवन, चाहे वो जैसा भी आइडिया देता है. फाइनली जब वो कल्चर डेवलप होगा, एवरीबॉडी विल कम अप विद आइडियाज. मे बी आप में से आउट ऑफ 100 वी विल शॉर्ट लिस्ट के 5 आइडियाज अच्छे हैं, उसको रिफाइन करके 1-2 आइडियाज आगे बढ़ सकते हैं. दैट इज हाउ वी कंट्रीब्यूट. तो हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर करना है. वी लुक ऑन द पॉलिटिशियंस, वी ऑलवेज लुक ऑन द आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, एवरीथिंग. आई थिंक वी है द डे वी विल रियलाइज that our contribution will make the difference. It will. Our country will start on growing. I think हम presentation से world water, food and water presentation चलेंगे. तो थोड़ा सा मैं आपको पानी के बारे में, ये general information है. You can have this presentation. I have given to your faculty. It's a good one. इसमें lack of drinking water है, waterborne diseases जो हम already अब जो रेमेडीज हैं उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया. फर्दर मैं इलैबोरेट कर देता हूँ. सबसे पहले तो हमने जो रिफॉर्म्स लानी है, हमने इसका वाटर को यूजेस जो है वो कम करना है.
एग्रीकल्चर में हमने कंट्रीब्यूट करना है माशाल्लाह यहाँ पे फूड के एक्सपर्ट्स हैं दे कैन गिव थ्रो लाइट ऑन दैट कि हम किस तरह से करेंगे हम जो घर में पानी यूज़ कर रहे हैं लाइक जब मेल्स शेव करते हैं तो टैप खुला रहता है थ्रू आउट जब हम टूथब्रश कर रहे हैं तब भी खुला हुआ तो अभी आप अगर होटल्स 5 स्टार में जाएं तो आप देखेंगे उन्होंने सेंसर लगा दिए हुए कि आप जब हैंड आगे करते हैं उतना पानी आता है और दैट्स वाटर कंजर्वेशन तो ये टेक्निक्स हमने घर में भी अप्लाई कर ली ये वाटर को कैसे कंजर्व करना है अब जिस तरह से हम देखते हैं कि घर में किचन में जब वेजिटेबल्स वगैरह हम वॉश कर रहे होते हैं तो वो हम टैप के नीचे वो जब 10 मिनट 15 मिनट वो पानी इतना वेस्ट हो रहा होता है कि अनलेस वी कैन गो फॉर द कंजर्वेशन और ये चीज़ आपके लेवल से स्टार्ट होगी स्कूल के लेवल से स्टार्ट होगी घर के लेवल से स्टार्ट होगी तो ये कंजर्वेशन जो है फिर आगे बढ़ेगी अब मैं तो थोड़ा सा आपको पानी के बारे में अवेयरनेस दे दूँ कि व्हाट इज़ वाटर और किस तरह ये यूज़ होता है और ह्यूमन बीइंग कैसे करते हैं इंडस्ट्री कैसे करती है और कैसे ऑब्जेक्टिव इज कि आप आइडियाज कंसीव करें हाउ टू कंजर्व द वाटर हमने पानी को मिनिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है फॉर टू सेव इट फॉर द जनरेशंस टू कम तो अराउंड 8% जो है ना पानी वो डोमेस्टिक यूज और एग्रीकल्चर में हमारा अराउंड 72% है और जो इंडस्ट्री में है 23%। अब एग्रीकल्चर में जो हमारी टेक्निक्स हैं अगर आप देखें जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं ऊपर चैनल वाली वाटरिंग के लिए अगर हम ड्रिप इरीगेशन में या सीड्स में ऐसे लेके हैं जिसमें मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो वो टेक्निक्स जो हैं और इंडस्ट्री में भी इसी तरह टेक्निक्स ऐसी यूज़ हों या रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर हो जिससे आपका पानी रीयूज़ हो सके कोका कोला आज से पहले जब बॉटल बनाता था तो मे बी 3 years बैक या 5 years बैक तो 1 लीटर बॉटल बनाने के लिए सर उसको 2 से 2.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड था जिसमें वॉशिंग रिंजिंग बॉटल की सब कुछ आ जाता एंड बाय द लास्ट 5 years they specially focus on this and now most of their bottling units they have around they are consuming 1.5 liters of water per liter of bottle they are making they have 2.5 to 1.5 liter that's the conservation of water that's the target globally they are achieving because in Pakistan we have the laws but we implementation we don't foresee that's the big problem हमारी बॉडी जो है इसमें भी 75% वाटर और बॉडी में भी बहुत क्रिटिकल है वाटर जो अभी पहला क्वेश्चन एक यहाँ में बैठा हुआ था तो आपने को किया था कि how is water is a food water is not a food water is indirectly is a food because our all food are being they require the water आप मेरीन लाइफ देखें 20% फूड जो है ग्लोबली वो मेरीन लाइफ की है उसमें भी पानी चाहिए और कोई भी ऐसा हमारा फूड आइटम नहीं है जिसमें हमें वाटर नहीं चाहिए तो इवन बॉडी में भी हमारे 75% वाटर है अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बेसिकली क्या उसमें वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो डिफॉर्म होना शुरू कर देते हैं उनकी जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी कम हो जाती है तो बॉडी इनडायरेक्टली वाटर इज लाइफ ये जी टोटल जो वाटर की अवेलेबिलिटी अराउंड द ग्लोब है इसमें हमारे पास जो फ्रेश वाटर है दैट इज फ्रेश मीन जो हम यूज ड्रिंकिंग के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्सेज कर सकते हैं दैट इज 2.5% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल 96.5% is available
in the sea, but we cannot use it. It has a high mineral contents, जिसको हम technically कहते हैं total dissolved solids. High, इसमें around 30 से 35,000 milligrams per liter. Then we have underground water, वो जो 2.5% है, उसका 30% underground water. It's not a 30% of total water available. It is 2.5%. तो glaciers 68.7. अगर वो climate change की जो हम बात कर रहे हैं, अब it means कि वो 2.5 में से around 70% is the glacier water. अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ग्लेशियर सारे मेल्ट हो जाएंगे एंड रनिंग शॉर्ट ऑफ दीज वाटर रिसोर्सेज. पानी में जो जनरल कंपोजिशन है उसमें 3 तरह की कंटेमिनेशन है, एक फिजिकल, एक केमिकल, एक बायोलॉजिकल. फिजिकल कंटेमिनेशन में आप देखते हैं टर्बिडिटी, जिस तरह कैनाल वाटर है तो टर्बिड नजर आता है, इस तरह कलर, उसका टेस्ट, ऑर्डर, टेम्परेचर, दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स. और जो केमिकल कंपोजिशन में एसिडिटी, क्लिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड, क्लोरीन नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है. हम क्लोरीनेशन करते हैं पानी की फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर. आयरन, मैग्नीज, लेड, डिसॉल्व्ड गैसेस, नाइट्रोजन, मेटल एंड सस्पेंडेड जो आपके बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स जो हैं. डिफरेंट सोर्सेज विच वी हैव, वो आपको पता है, डीप वेल है, शैलो वेल है, सरफेस वाटर. दीज आर द जनरल वाटर कंपोजिशंस. These are the WHO standards for drinking water. WHO says or recommends various parameters and their maximum allowable concentration which are fit for the human consumption. And, we have recommended TDS, total mineral content, 500 under their standard, but the permissible limit is 1000 milligrams per liter. इसी तरह इसमें हमारे अब वाटर कंजम्पशन को देखते हैं ताकि आप कंजर्वेशन को बेहतर अंदाज में देख सकें. जब मैंने 2-3 स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, इसके अंदर आपको आइडिया मिलेगा जब आप एक कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं या यूनिवर्सिटी बना रहे हैं या हॉस्टल बना रहे हैं या डिफरेंटली, तो वहाँ पे वाटर की किस तरह से प्लान करना है और उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है. जो मेरा डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर है, जिसको हम हाउस होल्ड वगैरह कहते हैं घर में, वो 135 लीटर्स पर डे पर पर्सन, इसकी बेस पे हम एस्टिमेट करते हैं. और पब्लिक यूज अगर मैं सपोज एक छोटी सी हाउसिंग कॉलोनी बना रहा हूँ या मैं पोपरा टाउन DHA बना रहा हूँ, तो या उसमें इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ. तो पब्लिक यूज के लिए जो हम कॉमन टॉयलेट्स मार्केट्स में ये बना, तो उसमें 15 लीटर्स पर पर्सन पर डे जितना वॉकिंग होगा. और फायर फाइटिंग के लिए 15 लीटर्स, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए 15 लीटर्स. अगर उस एरिया में कुछ इंडस्ट्री भी लगनी है, तो जिस तरह कोट लखपत रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ है, तो वो जब आप सिटी प्लान कर रहे हैं तो सिटी में इंडस्ट्रियल एरिया भी समटाइम्स आ जाते हैं. तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है पानी की 270 लीटर्स पर डे पर पर्सन की बेस पे आप प्लान करते हैं. अब वो जो 135 लीटर्स जो हमने देखा था कि डोमेस्टिक यूज में है, तो वो 135 लीटर्स क्या है, उसका ब्रेकअप क्या है, तो एवरेज ब्रेकअप हम लेते हैं. बाथिंग के लिए, क्योंकि हम आजकल हमारे शॉवर का रिवाज है, शॉवर से आप पानी लेंगे वो ओपन, आपका उस वक्त जितनी देर 5, 10, 15 मिनट जितनी देर टेकिंग शावर, द वाटर विल बी गोइंग वेस्टेज. शायद जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम बाल्टी में पानी यूज़ करते थे तो कम होता था. तो वी नीड टू लुक इनटू दैट. द रीज़न फॉर गिविंग दिस फिगर इज कि आपने देखना है कि हम कितना कंट्रीब्यूट इस एरिया में कर सकते हैं. तो इसमें शावर के लिए आप 55 लीटर, वॉशिंग क्लोथ 20 लीटर्स पर पर्सन पर डे, and then the cooking 5 liters, drinking 5 liters, or washing utensils 10 liters, or washing houses 10 liters, and WC में आप देखें 30 liters. कितना पानी है हमारा इसमें.
ओवरऑल 135 का ये ब्रेक होगा. अब now if we go for the commercial aspect of this water consumption, factories with bathroom, जहाँ भी कोई भी इंडस्ट्री है वो हम 45 लीटर पर डे, और फैक्ट्रीज विदाउट बाथरूम 30 लीटर. यहाँ पे शॉवर वगैरह वहाँ पे चाहिए. स्कूल में नॉर्मली 4 लीटर, और बोर्डिंग जहाँ स्कूल में हो वही डोमेस्टिक वाली कंजम्पशन 135 लीटर पर डे. अगर आपने ड्रिंकिंग के लिए लेनी है, कोई अपने स्कूल के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लगाना है, तो वो आप प्लान करेंगे 4 लीटर. 4 लीटर नॉर्मली स्टूडेंट डोंट ड्रिंक. It's normally average is 2 लीटर मैक्सिमम पर डे कोई यूज़ करता है. लेकिन जब वो ग्लास में पानी लेने जाते हैं तो वो 50% के करीब वेस्टेज भी हो जाती है. उसमें कोई रिंस कर रहा है, कोई टैप खुली रहेगी. तो ये अराउंड 4 लीटर्स के ऊपर आप प्लान करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए. इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं तो जिनके 100 बेड्स हैं वो 340 लीटर्स पर बेड प्लान करते हैं, और जो अबव 100 वाले हैं वो 450 इसलिए कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा. जो 450 के हॉस्पिटल्स के साइजेस हैं बेड वाइज, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा उसके लिए उतनी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. इसी तरह हॉस्टल्स का है और ऑफिस का. ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि वाटर कंजम्पशन जो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कॉटन 1 kg ग्रो करने के लिए वी रिक्वायर 10,000 लीटर ऑफ वाटर. राइस के लिए अराउंड 2500 लीटर ऑफ वाटर. वीट के लिए 1350 पर केजी बात कर रहे हैं. मेज के लिए 122, पोटैटो के लिए 287. एनसी इसी तरह ये वाटर कंजम्पशन आप देखें. अब ये टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री को पकड़ा है वेरी कॉमन, क्योंकि एवरीबॉडी इज वेल अवेयर ऑफ दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो इसमें अगर आप देखें तो यूज गैलन में यूज दिया हुआ है कि आप 1 kg या पर पाउंड जो है वो 80 लीटर पानी यूज करें. अब टेक्सटाइल में भी वो टेक्निक्स जो हैं यूरोप ने मशीन, डाइंग मशीन, ब्लीचिंग ऐसी की हैं जो वाटर कंजम्पशन कम करें ताकि हमारा वेस्ट वाटर भी कम करे. These are the pH values for various फूड जो हम लेते हैं कि जब एसिडिक नेचर की फूड कौन सी है और बेसिक नेचर की फूड कौन सी है. और ऑक्सीजन, पानी में मैरीन लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है. जब हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को डिस्चार्ज करते हैं इनटू रिसीविंग बॉडी और अल्टीमेटली इट गोज इनटू द सी, तो वो सारे का सारा ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, जिससे मैरीन लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. और इसके टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है, आप देखें कि पानी में जो एम्बियंट जो हम पानी अंडरग्राउंड से ले रहे हैं या ड्रिंक करते हैं, इसमें 25 डिग्री का टेम्परेचर हो तो 6 मिलीग्राम पर लीटर जो है ऑक्सीजन है. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा. आई थिंक दीज आर द वेरियस टेक्निक्स. थैंक यू वेरी मच. मैंने काफ़ी टाइम